हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैलेंजर्स। होप आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे होंगे और आपको बहुत अच्छे से अब समझ आ रही होगी केमिस्ट्री। तो आज फिर मैं आपके लिए ले आई हूँ डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। आई जस्ट टेल यू अबाउट एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को जानना कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप ये सीरीज जानेंगे, इफ यू विल लर्न दिस सीरीज, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। ओके, you learn this series by heart and then only you'll be able to solve the questions of activity displacement and double displacement. Like it will tell you the reactivity कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है और कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। लाइक इसमें मैंने बहुत सारे मेटल्स लिए हैं, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, गोल्ड। ओके, तो ये सारे मेटल्स हैं। ओके, इसमें सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड। द लीस्ट रिएक्टिव इज गोल्ड एंड द मोस्ट रिएक्टिव इज पोटेशियम। ओके, सो डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर। तो देखकर ही समझ आ रहा हो कि जैसे जैसे हम इस सीरीज में नीचे जाएंगे एक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ओके, इट मीन्स दैट इफ यू कंपेयर एनी टू बेरियम एंड एल्यूमिनियम, सो विच वन विल बी मोर रिएक्टिव? ऑब्वियसली बेरियम विल बी मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। इसका मतलब कि इस सीरीज में कोई भी दो मेटल अगर हम ले लें, ओके, तो उसमें जो ऊपर वाला मेटल है वो नीचे वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर? कोई भी दो, एनी टू एलिमेंट यू कैन टेक एनी टू मेटल। लाइक इफ यू टेक कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, तो इसमें कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। इट मीन्स द वन विच लाइज ऑन द टॉप इज मोर रिएक्टिव देन द बॉटम वन। So this point is clear। अब हम क्या करेंगे, अगर आप एक आयरन नेल लेते हैं, ओके, आयरन नेल, काटी जानते हैं ना, काटी, यू विल डिप इट इन द जिंक सल्फेट सोल्यूशन, ओके, इन वन बीकर, एंड इन द अदर बीकर you will take iron nail and dip it in the copper sulfate solution. What is the color of copper sulfate solution? Blue color. Okay, so you will do these two things. तो अब क्या होगा कि we will compare this, see iron and zinc। अब हम कंपेयर करते हैं आयरन एंड जिंक। आयरन एंड जिंक दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और आयरन इज लेस रिएक्टिव। मींस आयरन इज नॉट दैट मच रिएक्टिव कि वो यहां से जिंक को हटाए और इसकी जगह ले। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि अगर कोई मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करना चाहता है उसके सॉल्यूशन से, मतलब आयरन अगर जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस करना चाहता है तो कब कर सकता है? अगर ये आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो। बट हियर आयरन इज लेस रिएक्टिव, इट मीन्स दैट दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आयरन टू डिस्प्लेस जिंक बिकॉज आयरन इज लेस reactive. See here. Okay, now in this case what you will see, iron and copper, let us compare iron and copper. Iron and copper, इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Iron is on the top, it means iron is more reactive than copper. Okay, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है इसके सॉल्यूशन से। कब? अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो। And say yes, it is more reactive. It means iron can displace it. मतलब इसकी जगह ये ले सकता है। So it will form FeSO4 plus copper will be deposited. तो जब हम आयरन ले लेंगे तो क्या होगा? कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और आयरन क्या करेगा? It will form ferrous sulfate. तो this is blue color will change to brownish color. Okay. So this is the displacement reaction in which one metal displaces the other metal from its solution. Okay, or you can say one metal displaces the other metal from its salt solution if it is more reactive. Okay, if this metal is more reactive than the one present in the form of solution. Okay, so this is only displacement reaction. I hope this displacement reaction is now very clear. So you just learn it by heart, this activity series, then only you will be able to do displacement. So now we'll do double displacement reaction. So now we are going to do double displacement reaction. तो ऐसे reactions जिसमें दो compounds आपस में ions exchange करते हैं, दोनों अपने अपने ions को exchange करते हैं and they form a new compound.
new compounds, this is known as double displacement reaction. So we are going to do some examples like AgNO3 plus NaCl. Okay, तो इसमें कौन कौन से आयंस है? फर्स्ट we should know the ions कि Ag प्लस है, NO3 माइनस है और NaCl में क्या है? Na प्लस है and Cl माइनस है. अब क्या होगा? They will exchange this plus and minus. Obviously plus minus they will form electrostatic attraction. Okay, electrostatic attraction will be there when they will break in the solution. So they will form a new compound like AgCl will form, and the other one will be Na plus and NO3 minus and NaNO3, sodium nitrate. Okay, so in this reaction what is happening? Ions are getting exchanged and a completely new compound is being formed, isn't it? So silver nitrate reacts with sodium chloride to give silver chloride and sodium nitrate, and this silver chloride is present as white PPT. Okay, so this is present as a white precipitate. Next is BaCl2 plus Na2SO4. So here also you can see there are plus and minus, negative, Ba2 plus, Cl minus, Na2 plus and SO4 2 minus. So here also they will exchange their ions. So it will form BaSO4 plus sodium chloride, NaCl. Okay. So here also two new compounds are formed. Now this barium sulfate, this is also present as white precipitate. Okay, so in both these reactions what is happening? Double displacement. ये यहाँ आ रहा है और ये यहाँ आ रहा है. Okay, this one is coming here and this is coming here. So the ions are getting doubly exchanged, है ना? So this is known as double displacement reaction. And one more thing you can notice here in this reaction, that precipitate is being formed, isn't it? जरूरी नहीं कि हर जगह white precipitate हो. Coincidentally here दोनों में white precipitate हो रहा है. It can be black, it can be brown, any colored precipitate can be formed. And I've already told in my previous videos कि precipitate क्या होता है. Okay, it settles down in the bottom and it is insoluble in the solution. So such reactions are also known as precipitation reactions. Okay, so this is all about double displacement reactions. So now we are going to do oxidation reduction. Oxidation मतलब क्या होता है? Oxidation, from the word only you can say addition of oxygen is known as oxidation. Reduction means अगर oxygen के terms में ले तो removal of oxygen can be also be called as reduction. Reduce हो रहा है. Oxidation अगर oxygen के terms में आप learn करेंगे तो oxygen add करने को कहते हैं oxidation या oxygen remove करने को कहेंगे reduction. और in terms of hydrogen, removal of hydrogen can be called as oxidation, या addition of hydrogen can be called as reduction. Okay, so don't get confused. Oxidation मतलब oxygen add हो रहा है तो obviously reduction में oxygen remove हो रहा होगा, और reduction में removal हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा. ओके, व्हेन यू विल सॉल्व द एग्जांपल्स it will become very clear. So here only I am going to do one example. Copper oxide plus hydrogen gives copper plus H2O. So here you can see some exchange of hydrogen and oxygen is happening here. तो यहाँ CuO का क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉपर ऑक्साइड बन गया कॉपर. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया. सो यू कैन से दैट कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, या कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन. ओके, एंड हियर हाइड्रोजन, यू कैन सी इन हाइड्रोजन व्हाट इज एडेड? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ऐड हो गया हाइड्रोजन में, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन.
तो यहाँ क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड का हुआ रिडक्शन, इट बिकेम कॉपर, एंड हाइड्रोजन को क्या मिल गया, यही वाला ऑक्सीजन कहाँ से मिला, फ्रॉम हियर ओनली. New atoms are not created. No, in all the videos I have told you, many videos, that new atom reaction जो होता है इसी atoms के exchange से होता है. तो this oxygen came from here. So this became H2O. Okay. So addition of oxygen is known as oxidation. So this is only known as oxidation and reduction reaction. तो जब भी oxidation होगा एक substance का, तो obviously दूसरे का reduction होगा, या एक का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन कहीं ना कहीं जाके ऐड होगा. इट मींस बोथ आर साइमल्टेनियसली हैपनिंग टुगेदर. ओके, तो सच रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, जहां रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा ही. इट्स पॉसिबल, it's most probable that both will happen together. That is why such reactions, oxidation reduction reactions, are known as redox reactions. Okay, now here one more term is coming, oxidizing and reducing agent. Agent क्या होता है, जो हमारा कुछ काम कर देता है ना, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं. तो यहाँ पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किसने करवाया, कॉपर ऑक्साइड ने करवाया. Therefore copper oxide here is the oxidizing agent. Okay, copper oxide here is the oxidizing agent. Okay, now copper oxide का reduction क्यों हुआ, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन ने यहां से ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन टुक अवे द ऑक्सीजन, सो हाइड्रोजन इज द reducing agent. Okay, so here whenever oxidation and reduction is happening, oxidizing agent and reducing agent is always present there. So any substance which causes the oxidation of the other substance, यहाँ copper oxide हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो therefore copper oxide is the oxidizing agent. And any substance which causes the reduction of the other, मतलब हाइड्रोजन की वजह से यहाँ copper oxide रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन इसका रिमूव हो गया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट. सो आई होप द टर्म्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑल दीज टर्म्स आर क्लियर. इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू चिल्ड्रन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. So we'll do one more example of oxidation and reduction here. Here hydrogen sulfide gas is reacting with chlorine. So what is formed? Sulfur plus hydrogen chloride, HCl. Okay. So now again you can see here H2S का क्या हुआ? Hydrogen remove. So in terms of hydrogen, what was the definition of oxidation? Oxidation में क्या होता है? Oxygen add होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है. सो हियर देयर इज नो ऑक्सीजन, बट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन वी विल सी हियर. ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ओके, नाउ टू क्लोरीन व्हाट इज हैपनिंग, हाइड्रोजन इज गेटिंग एडेड, ये वाला हाइड्रोजन क्लोरीन में ऐड होके बन जा रहा है HCl. सो अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और या तो addition of hydrogen. So here chlorine is getting reduced, so reduction is happening here of chlorine. So again this is also one of the redox reaction. Now can you make out which one is the oxidizing agent and which is the reducing agent? Here H2S only, what H2S क्या कर रहा है, क्लोरीन का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है ना, यही इसको हाइड्रोजन दे रहा है. So here H2S is the reducing agent. And chlorine, what is happening, what chlorine is doing, it is taking hydrogen from sulfur, isn't it? तो that is why chlorine क्या कर रहा है, सल्फर का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, तो chlorine is known as the, chlorine here is the oxidizing agent. Clear? H2S is the reducing agent and chlorine is the oxidizing agent here.
So this is in terms of addition and reduction of hydrogen, addition and removal of hydrogen. ठीक है, यहाँ इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो इट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड हो गया तो रिडक्शन. इसने ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प किया, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शन. एंड इसने हाइड्रोजन को ऐड ले लिया, दैट इज व्हाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन.